इफ यू आर नॉट लिसनिंग माई ब्रेन नोज. आपके माइंड में क्या हो रहा है और मेरे माइंड में क्या हो रहा है, दे बिकम फोटोकॉपी और मिरर. लिसनिंग इज एन एक्ट ऑफ लव. अगर आपका माइंड कहीं और चला गया है तो उसके माइंड में हो जाएगा कि दिस पर्सन डजंट केयर. डोंट टेक डिजिटल नोट्स. इफ इट इज यूजलेस, ड्रॉप आउट. डोंट अटेंड द कॉल. What is the most important part of communication? Can somebody tell me? Raise your hand, I'll ask you. Yes. Listening. बोल दिया उसने, listening. Now, there are problems in listening. Listening में problem होता है. Now, I'll give you one very powerful. See, our brain science is called neuroscience. How does the brain work? And neuroscience has made a lot of, earlier 20 years ago the brain mapping was not there. Now we have powerful machines to map the brain and to study the impact of brain, different parts of the brain, what they are doing. And there is a concept of mirror neurons. So I'll just explain to you this concept of mirror neurons. What is mirror? Mirror मतलब शीशा, right? We all use mirror. In the washroom there is a mirror. We go look at ourselves, put a powder, lipstick, shave, whatever, brush our teeth. We look at the mirror. हमको दिखाई देता है, right? And what is neuron? The brain cells. Our whole body is made of cells. Even the nail, it is skin cells, hair cells. Heart में, cardio में, the muscle cells are there. Similarly, there are brain cells. So, brain cells are called neurons. Right? Neurons. Brain cells. Now, what is the concept of mirror neurons? आपके माइंड में क्या हो रहा है और मेरे माइंड में क्या हो रहा है, दे बिकम फोटोकॉपी और मिरर, रिफ्लेक्शन. सो वॉट एवर आई एम राइट नाउ स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग. व्हेन आई लुक एट यू, आई गेट exactly my brain cells know whether you are listening or not listening. So it's called authentic listening. वाकई में real if you are listening or you are just, मेरा mind कहीं और है but you are physically present here, you are smiling, you are moving ahead. So authentic listening. Authentic means truly, सचमुच में सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. Authentic listening. Now, if you are not listening, my brain knows. If you are speaking to me. If I am not listening, your brain also automatically knows. Girlfriend, boyfriend. Girlfriend is trying to say something. Boyfriend बोल रहा है, उसका माइंड में कुछ और चल रहा है. Husband, wife. Every relationship, as long as human beings are there, human beings बात कर रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो अगले को पता चल जाता है, एक दूसरे को पता चल जाता है. When I am speaking, if you are not listening, I know. If you are speaking, I am not listening, you also know. This is the concept of mirror neurons. From thousands of years, when we listen, our facial expressions change, our muscles change, our eyes behave in a certain, thousands of muscles are there. So these muscles, when they move, the way they move, I don't have to be detective. सैयद मेरा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. Automatically. Key word is automatic. Automatically, I know whether you are listening or not listening. And you also know. अब problem क्या है? Listening is an act of love. Please understand.
When somebody is saying, हम लोग बोलते हैं care. Listening is equal to love, care, trust. Listening. Suppose I go to a doctor. Before I said something, I know, I started writing I have not shared my problem. How do you know? Customer comes, Bhim, somebody from your team goes to take the order. वो अभी बोला ही नहीं, सर क्या, what do you want? What आपको किस तरह का खाना खाना है, क्या पीना है आपको, कितना भूख है. Suppose and the customer is started speaking, okay, and I don't even listen, then I'll do the wrong thing. Then I give the menu, sir आप decide करो क्या. That is a different way of working. Then I having a conversation, बातचीत जो करना है. Now बातचीत में when somebody is sharing, somebody is listening. If you listen, it's an act of love, care. Whether it's a doctor, a restaurant, a customer बोल रहा है, patient बोल रहा है. When you don't listen, other person knows automatically कि वो सुन नहीं रहा है. Sometimes when I'm speaking, your mind will go here and there, right? 10 जगह जाएगा. Mind का action है, it will go here and there. Do you agree? Now, when your mind goes here and there, the person who is speaking already knows कि आपका mind चला गया. Then what is the problem and what is the solution? The problem is that अगर आपका माइंड कहीं और चला गया है तो उसके माइंड में हो जाएगा कि दिस पर्सन डजंट केयर. देन व्हाट यू हैव टू डू, हाउ डू यू सॉल्व इट? यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड बैक, फॉरगिव योरसेल्फ, वापस लेके आना है. द मोमेंट यू अरे व्हाट आई डू एट टाइम्स इज ऐसे, सर सॉरी मैं माई माइंड वेल से, कैन यू रिपीट? नो प्रॉब्लम सर, मैं कुछ और सोचने लग गया था, कैन यू प्लीज रिपीट? That's also okay. But you have to really listen. ध्यान से सुनना है, absorb करना है. Cricket bowling, bowler is running, batsman bat घुमा देगा, अरे he is still running, he is not thrown the ball. I know what you are saying, no? First part, most important part, Alu also shared, is listening. Authentic listening. If you listen to the customer or to anybody, your boyfriend, girlfriend, husband, wife, father, mother, child, when you listen, it's an act of love. That means you care. When you care, relationship can be built. When you don't care, no relationship is built. So, when you are dealing with someone, I want Prashant to do some action, but first I have to listen to Prashant. मेरे को प्रशांत के साथ रिलेशनशिप बनाना है, बट मैं को really सुनना है प्रशांत. अगर मैं सुनूंगा नहीं तो प्रशांत को पता चल जाएगा ये तो केयर, he doesn't care, then रिलेशनशिप बनेगा नहीं. जब वो सुन रहा है, कोई भी, एनी गुड बैड लिसनर डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट गुड लिसनर, ग्रेट लिसनर, बैड लिसनर, ह्यूमन बीइंग है ना, उसका माइंड जाएगा इधर उधर. एवरीवन्स माइंड विल गो हियर एंड देयर. गुरुजी, बिग गुरु, स्मॉल गुरु, रंजन चोपड़ा, आलू, एनीवन, देयर माइंड विल गो हियर एंड देयर. डू यू एग्री? एवरीबॉडी माइंड विल गो हियर एंड देयर. आपको करना क्या है? अपना माइंड, जैसे ही यू रियलाइज दैट आपका माइंड उधर गया है, यू हैव टू बी अवेयर कि सामने वाले को पता चल गया कि तुम नहीं सुन रहा है. फॉर 1 सेकेंड, 5 सेकेंड आपका माइंड उधर चला गया, उसको पता चल गया. तो यू हैव टू ब्रिंग इट बैक अगेन, ब्रिंग इट बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बार बार जाएगा माइंड इधर उधर, फिर ले आओ, फिर ले आओ, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट,
Don't keep distractions. Yesterday about sleeping I told you. Don't keep alarm, don't keep any light on, don't keep, like in Avatara all the curtains have double curtain, no? Just you have to, one is this type of curtain, other is dark curtain. You put the dark curtain. कोई light नहीं आना चाहिए अंदर में, correct? In the morning somebody was playing music, I think Zumba or something, you know, I can hear it in my room. I was very disturbed. So no sound should come. Remember I told you. Now when you go to meet a customer, आपका alerts and all that, please switch off. Don't live in a world of alerts. एक WhatsApp आएगा alert बज जाएगा, एक email आएगा alert हो जाएगा. Stop your alerts. Only time I take a phone call, there are 2-3 people. When they call, like my wife will call, my son will call, I will take the call. Sometimes I am sitting in front of the customer, okay, then or somebody else. Suppose Modi ji बैठे हैं आपके सामने, will you take the call? No. You have to treat every person you are with like the same respect. Same every time you are listening to someone, you have to treat the. Don't take digital notes. Lot of people are taking notes on their phone or on iPad or on computer. Sir, hey, what are you doing? I'm taking. There is a problem in digital notes. Something, some email, some alert will come, your mind will go there. Human being, आपका alert आएगा तो आपका mind जाएगा. एक half second also your mind will go here and there. Half second also if your mind goes here and there, gone. Multitasking. अरे video call में ना, I'll switch off my video, I'll do other thing, I'm listening. Useless. If you are switch on your video, don't do other things, don't do multitasking, don't try to be smart, don't try to be clever. हम लोग बहुत चालाकी करते हैं, अरे यार उसको पता नहीं चलेगा, मैं तो वीडियो ऑफ करके अपना 2-3 ईमेल 2-3 व्हाट्सएप निकाल दूँ. Useless. The person who's, don't talk, you drop the call. Sir, मैं आज busy है, useless call man. I don't know why that person called me. If it is useless, drop out. Don't attend the call. If you are on a call, keep your video open. Some people, na, call is there, but everything is dark. Face also I cannot see. Sometimes they show the top of the face. Funny. Purpose of communication is to show your face, listening, absorbing. ये purpose है. Zoom call, video call, Google Hangout, Meet. Purpose is not that you do other things, multitasking. In your life, you think, I can do in 5 minutes, I can do 3 things. Boss, please, हाथ जोड़ के विनती है, don't do 3 things. Only do one thing. The person you are talking to, it's an insult. You don't care. You are giving the signal, I don't care. You are giving that signal. अरे यार तुम बोलो ना बोलना है, मैं कुछ और कर रहा हूँ. Some people very smart. They are on the call, video is on, but वो चुपचाप जो है ना, दूसरा email में उसका आँख से ही पता चल जाता है दूसरे को. I know immediately, you know, in front of me I know. And people who are multitasking and all, I know इसको तो मैं I tell very. Sometimes I am not polite. I said, okay, you can go. Please do other things. Don't be on my call. Multitasking don't do because it's an insult. You can't build. You're wasting time. Why you want to waste your time, other person time? 100% when you are somebody is speaking, you be there or don't be there. आप मना कर दो, बोलो बॉस मैं दूसरा काम करना है यार, ये useless call. If you think it, you don't want to build a relationship, it's you have other thing, priority में कुछ और करना है, वो करो. आप मत रहो उधर में. Call में without video on. One day one salesperson told me, sir, customer meeting, sir, closure होगा. और next step इसमें क्या है कि कुछ बोलना चाहता है ना, उसको खाली होने दो. खाली होना जरूरी है. I want to put the glass of water. 2 सिप डाला, आपने रोक दिया बीच में, खाली होने दो. जब उसको समझ में आ जाएगा कि आपने सुन लिया, खाली हो गया. कुछ बोला डजंट मीन खाली हो गया.
मैंने कुछ बोला डजंट मीन खाली हो गया। मेरे को जो भी बोलना है आपको वो खाली होने दो, सुन लो। समथिंग रॉन्ग हैपन, समथिंग बैड हैपन, उसको आपके गुस्सा उतारना है, जो भी है, खाली हो जाने दो उसको। हम लोग खाली नहीं होने देते उसको। जब महसूस होगा कि मैं खाली हो गया, इसने सुन लिया, तब थम्स अप हो गया, आपका काम आसान हो जाएगा। उतना ही आपको जो चाहिए उससे रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप तभी बनेगा जब वो आपने बोला, उसने बोला, आपने सुना और वो खाली हो गया। Most of the time it is emotional emptiness. Like I have some emotion I want to tell you. I have some problem, some challenge I want to tell. आप सुन नहीं रहे हो. That is the issue. When you meditate, फिर आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर आप सुन भी सकते हो अच्छी तरह से. Before a meeting, 5 minutes meditation, 10 minutes meditation, just nothing. Doesn't matter what method. आप रिसेप्शन में वेट कर रहे हो किसी का, बैठ गए आंख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट. Sometimes I go to airport like Mopa airport. I am before time. आधा घंटा वेट करना है, फ्लाइट लेट, बोर्डिंग लेट, whatever. 10 मिनट मिला, don't go here there everything. Just be with yourself. Just shut down your, close your eyes. I'll give you a secret about this. Human brain, large part of the brain is used for visual processing. मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं स्मेल कर रहा हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ. This input is coming right from tasting, smell, sound, eyes. Maximum part of the brain, I think about 80% of the brain is used for visual processing. कौन क्या हो रहा है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी जा रहा है, कुत्ता आ रहा है, you know, it visual processing. When we say meditate, we close our eyes. When we close our eyes, पूरा brain, 80% of the brain is released. कान तो अभी भी चालू है, but कान में ज़्यादा नहीं लगता. 5% of our brain is used for auditory. 80% is used for, so you have to close your eyes. When you close your eyes, say you are going in a car, somebody is driving, you keep your eyes open, you are looking, all the cars are coming, going, red light, alert, oh fast चला रहा है, all your brain is taking all this. ये सब इनपुट आपका ब्रेन ले रहा है. यूजलेस नॉइज ना. आपको क्या करेगा, उधर से गाड़ी आ रहा है, आप टेंशन हो गया, अरे वो मार देगा मेरा गाड़ी को, ये वो हॉर्न बजा रहा है सब कोई, ये वो. आंख बंद कर लो, स्विच ऑफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. यू लर्न हाउ टू. हम लोग बाहर की दुनिया में कुछ खोज रहे हैं, वो सब यूजलेस डेटा है.